and then we will start the proper class. So let's start with Sakshi. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. So my name is Sakshi Singh and I'm doing my BCom Honors from Basanta College for Women, which is affiliated to BHU. And I've joined this course basically to gain knowledge and which will help me in my future career also because from earlier only my scope was to do MBA. So I Mm-hmm. thought that this is the great platform for me to do MBA in a great way. Okay. I've And joined this school. why are you planning to do MBA? Ma'am, because I want to do jobs, corporate jobs. I'm interested in that. So I've Hmm. also preparing for CAT also. So I thought Okay. that this also I can do, which will benefit me in the future. All right. Okay. Good. Thank you, ma'am. And you're in your final year, right? Actually, you're the one Yes, who sent me the LinkedIn request today. yes, ma'am. Yeah, Yes, okay. Saw you that. Yeah, yeah. You were in the classes earlier, right? In the yes. last classes, and you didn't have your LinkedIn account then. So it's a new No, account ma'am. that you have opened. No, ma'am. You I had. was having, but Okay. today. Hmm. Okay. Great. Good. Good to connect with you, Sakshi. Thank you, ma'am. Yes, Anjali. Good evening, ma'am. So my name is Anjali and I'm in my first year, graduation first year, and currently pursuing graduation in geography honors Oh, wow. from Okay. BCAM, which is affiliated to BHU. Mm-hmm. And I have opted this course as my career option in future so that I can learn some skills which are required in these days. So Okay. this is That's about great. me. That's nice. And who all are in your family, Anjali? I have my father, mother, and my two brothers. One of them Okay. is in the corporate sector already, Okay. and one is a younger brother, which is who is in class 10. So Very nice. So which corporate does your brother work in? he is in computer science department. His profile is AI and machine learning, and currently Okay. is working in AD Global 360. The name of the company is In Gurgaon yes, or ma'am. Bangalore? In Gurgaon. Okay. All Gurgaon, right. Gurgaon. Good. Very nice. Yes, Shivang. Can we know a little bit about you? Yes, ma'am. Sorry for late joining. No problems at all. Yeah. Currently, ma'am, I'm working with Panasonic Life Solution India Private Limited in Mm-hmm. Daman only, and I'm from Daman itself. Okay. So Great. currently, I'm working in HR and admin department, but uh, more in admin and 30% in HR. That is operation Okay. part. Okay. And you are born and brought up in Daman? Yeah, yeah, yeah. I'm Very from nice. Daman. Okay. Great. We have a faculty from there. She was in supply chain management. Reena ma'am. I know Hardik sir. Acha, Hardik sir, you know. Yeah. Hardik sir is Hardik my is ex boss. He is okay. also in Panasonic Life Solution He earlier. was in Panasonic, right, right. Yes. Yeah. So Reena ma'am is in supply chain. She teaches supply chain management for us here in YSI. She's also from Daman, and Okay. she is working very closely with me in my company now. All right, good to know about you all. So, how do you think we should start these classes? What's your expectations from these classes first? Ma'am, we want to learn basic to high, basically. You want to learn basics to everything. High or advanced. Yes, ma'am. Just 4 everything. months में it would be very difficult to be honest. Yeah, but what we will do is, see, the more my expectation from all of you is to do a little bit research work in terms of, finding things beforehand, whatever topics we will be taking. So the course would be divided between me and Hardik sir. So some portion I will take, some portion he will take.
And as and when he would be available, we will try and give him all those things that he is good at, and he can really take, especially the labor laws and performance management system part and all those things, right? And what we are going to do is see, because it gets very difficult for us to take you through theory in the classes. Theory takes a lot of time. So it's good that if you come prepared a little bit, reading the theory and then asking questions about those things, so that we can take you through the practical exposures. That, for example, if you read about performance management system in advance, right, you will know at least that there are 6 different types of methods that can be used in the organizations. So उन 6 methods में से then we can always talk about one in each class, or maybe 2 or 3 in one class, so that these 2 hours can be utilized in understanding how practically these would be utilized for a company. So a company of 100 employees, a company of 500 employees, and a company of 10,000 employees, how you can effectively use these 6 different methods in the organization, any one of them or all of them together, right? How you can combine. So similarly, every topic that we have, we are going to do the same things, right? So I'll tell you the topic in advance, that what are we going to do tomorrow, so that you come a little bit prepared, and then we can talk about those topics in details. So like, Shivang is working in an organization, so he may know a little bit much more better than both of you. So you have a competition with you where you have, the learning can differ from what Sakshi knows, what Anjali knows, and what Shivang knows. Right? 3 different perspectives. We will be teaching you in the same way, like we do it for the other batches as well. But we thought last 4 or 5 batches that I have taken the classes for HRM, I have observed that if you come prepared, then we get to utilize the time more effectively and efficiently in terms of learning and observing what we want to take up. If we keep teaching you theory and giving you PPTs and all that to just go through the theory and keep repeating whatever is written in the PPT, it takes a lot of time, right? So we will share the PPTs with you. You can take the PPTs home. We can share at least maybe every subject, every topic that we are going to take. I can share the PPTs in advance, so that you can go through it in advance. You know what to ask, you know what to read. That can be done, right? And then so that you are prepared, what are we going to do? So today, because it's an introductory class, so I did not really prepare a presentation kind of a thing. It's an old presentation that I used in the classes for HRM. So I'm just going to share that. We are going to talk about the basics of HR. Simply. Starting from why HR is important in the organizations. In fact, I should take you through the entire PPT. You can see the screen, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So this PPT we basically created to make you understand why this particular course module for HRM through YSI is important, and what are the skills that you are going to learn, and what is expected out of you. Right? So the first question that we generally ask before starting any class or taking anything in life, basically is, why do you want to do something? Right? The same thing that I asked you, that what is the need for you to do this course? Why is it that you are interested in doing HRM and not marketing, not finance, not digital, not any other? So basically, why we become interested in something is because of these 3 things, which we also call as ask strategy. Ask strategy is your attitude, why you want to know something, skills, how you want to do apply to those things, and what, which is your knowledge. These 3 things can really create a what we call it as competency in you, and that competency can build the entire fundamental structure of how you are going to do your jobs in the organization. See, one thing is that either you can do a job, right? Job is basically you got some tasks to do from morning to evening, you complete those tasks, you earn money, and you come home. And one thing is basically to create a career out of it. And if you want to create a career out of it, which means that you need to grow, you need to upgrade yourself on time to time basis.
So your attitude has to be a learning attitude. You need to have that learning ability in you, that anything new that is coming up, I should learn it and then I should be able to apply it. The same thing happens with the skills. So today I may be very good at different skills, but what is happening going to happen tomorrow? So for example, Anjali said that his brother is working in AI. So what is AI? Artificial intelligence today is touching about every portion of our lives. किसी में भी चले जाओ आप, right? We spoke about it, I think, in the last class also when I was taking that even if you're buying something smaller on any app, you're watching a television, a Netflix program on your phone or TV, anything that you're doing today, it's all confided, everything is configured through AI. So much of information which is available, that information is being used in a manner that it is affecting our life. Some lives positively and some lives negatively also, right? Totally depending upon how are we using all these things. So this is basically knowledge. अब उस knowledge को how are we using and for what purpose are we using is basically creating the entire structure fundamental of why we want to do something in our lives. So if you have chosen HRM, so there has to be a very strong reason, not just reason, there should be a strong objective or a goal behind that, that okay, this is what I want to achieve in my life, even through MBA, even without MBA, even if I am in the first year, even if I am in a job, these are my goals. And after this 4 months of course, I want to at least have this much of information about or knowledge about these three topics or four topics, right? Because HR in itself is very huge. Imagine now why we call it HR purely because we talk about human beings, right? You are going to deal with 100 of human beings in the organization. Now imagine if you are at home, right? You are 5 or 6 members at home. इन 5-6 मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, घर में झगड़े होते हैं, भाई बहन के साथ भी, मॉम डैड के साथ भी, difference of opinion आते हैं, we don't agree on everything that they don't agree on what we say. So ये होता है. Now imagine a company of 10,000 employees and you are HR head. Now 10,000 employees, different difference of opinion, different backgrounds, different cultures, different regions, demographically, religion के thoughts अलग है, upbringing differently हुई है, totally different cities से आए हुए हैं, so many differences, and still they come together for one goal. और वो common goal क्या बन जाता है? Organization का goal. That this is what they want to achieve because the organization has given them employment. So now managing all those differences, managing all those conflicts and grievances is a very crucial part of HR that we all have to play in the organization. That people generally do not talk about that portion of HR which takes a lot of time in organization. Systems आप बना देते हो, policies बना देते हैं, procedures बना देते हैं, but उन process, policies और procedures का implementation to human beings is the most complex. Right, so that is where a lot of skills is required, a lot of knowledge in terms of what are we going to give you in theory here, your skills, that how are you capable, what kind of problem solving, what kind of decision making skills, what kind of analytical skills, communication, how you communicate with people, all these skills are there in you or not, and you have to develop that over a period of time. And attitude, obviously, without learning ability, I say that we cannot really compete with ourselves also. And now imagine we studied in colleges, I don't know how, 18 years back. I did my MBA 17, 18 years, 16 years back. Now, a lot of things have changed from what we learned and what is happening currently. If we won't upgrade ourselves on a regular basis, I don't think we will be able to teach you guys because you are the younger generation. You might know certain things much more in a better way than what we know. But that upgradation, that attitude of learning has to be there. Otherwise, we will not be able to match up to your expectation that this is what I want to learn, but ma'am ko to ye aata hi nahi hai because she is so old school. So this is what happens. That generation gap will keep coming in. And most of the relationship in professionally, I'm saying, basically faces problem because of these things and people don't grow in their own roles, right? Personally and professionally both. So that's the why of it. Then other hai, what are we doing in this course? So other than your HRM, human resource management, these are the few things that I really want all of you to have, right? Your listening ability.
has to be very strong, because until and unless it's for both of, I mean, for your side also, for my side also, it's very important that we need to develop that listening ability, because the more we listen to each other, the more we will be able to learn and adapt. Right? Not just from me, maybe from your own batchmates. अभी तो हम 3 students हैं. We are expecting next week that there might be 6-7 more students who will be joining this batch. So the richer the batch, imagine you will be learning from so many other people as well. अब तीनों लोग हैं यहाँ पर course में. Now Shivang has some experience in HR. While he will be sharing all these experiences and all, हमारे साथ साथ, so you will have me teaching you, you will have Hardik sir teaching you, and now you will have Shivang also sharing practical exposures in HR and admin that he has gone through, right? So इसी तरीके से अगर हम listening को increase करके रखेंगे, improve करके रखेंगे, so then I'm sure कि we will be able to learn much more than what is required. Then friendliness. Our classes are very, very, though we say professional, obviously you need to come, get ready nicely. You should look nice because it's going on YouTube. Other than that, we are very open in terms of our discussions and what do you call it? Interactions. I really want to keep it more interactive and not just keep it through the PPTs. That I show you a PPT and I keep repeating things from there. So आप देखोगे मेरी PPTs में text बहुत कम होगा, pictures ज़्यादा होंगे, diagrams होंगे, graphs होंगे, all those things will be there, and I'll try and give you the knowledge, and you can, so that you can listen to these videos later on. You can again see these videos on YouTube, because the more you will hear, the more you will be able to adapt. जो PPTs में लिखा रह जाता है वो फिर लिखा रह जाता है, and you won't be able to get time to read all those things. और वो सब books में मिल जाएगा. Today Google and internet has more knowledge than what we can in fact give, right? We can always give you our practical exposures, because हमारे practical experiences would be different than other people. So that is what we are here to give you. Then third point is open-mindedness. Of course, when you're learning, there would be different kind of topics that we are going to talk about. अब हम पॉश के बारे में बात करेंगे, which is prevention of sexual harassment. So sexual harassment के बारे में जब हम बात करते हैं, so different तरीके के topics और case studies में चीजें निकल कर आती हैं. So you need to be very open-minded about not thinking कि क्यों मैम बार बार ये words बोले जा रहे हैं, right? When we will talk about diversity, inclusion and equality, तब भी हम इन सब के बारे में बात करेंगे. We will talk about transgenders, why they are not getting jobs. We will talk about gays and lesbians, कि उनके साथ किस तरीके से ऑफिसेज में बिहेव करना चाहिए या किस तरीके से, because जब आप कंपनीज में आते हैं ये सब प्रोपोर्शन HR के अंदर आता है. यू नीड टू फॉर्म द पॉलिसी. अगर आप इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एक पॉलिसी होती है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब सबके लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के अंदर. मोस्ट कंपनीज फॉलो दीज थिंग्स टुडे, बट वो सिर्फ कागज में लिखा नहीं रहना चाहिए, वो आपको रियलिटी में अडेप्ट भी करना है, राइट? अब जो स्कूलिंग्स में नहीं हो रहा है, कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, हाउ मेनी गे और लेस्बियन फ्रेंड्स कम आउट इन ओपन? हार्डली, राइट? How many transgenders come out in open from, especially in tier 2, tier 3 cities, tier 4 cities? Hardly, because of parental pressure है, societal pressure है. People think कि मैं घर से भाग जाऊं या मैं सुसाइड कर लूं या मैं कुछ और कर लूं. So वो चीजें उनको ज्यादा आसान लगती है rather than speaking out because of the pressure. So as an HR, how you can contribute towards these areas also, so that things can improve, not just in organization but in society also at large, right? So that open-mindedness for HR is very important. Open-mindedness में एक और चीज आती है which is biased. हम लोग बहुत जल्दी बायस हो जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में होते हैं, बिकॉज द वे वी हैव गिवन अपब्रिंगिंग. अब फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए और लड़कों को नहीं बनाना चाहिए, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन बेसिक स्टीरियोटाइप दैट हैज बीन गिवन टू अस सिंस बर्थ, right? I'm not saying because I'm a lady, but I generally believe it in this particular thing, that cooking is a life skill. It has nothing to do with gender. It can never happen. लड़कों को भी अकेले बाहर रहना पड़ सकता है, लड़कियों को भी अकेले बाहर रहना पड़ सकता है, right? So sometimes you are in a hostel or you are in a PG, or when you will start your work, you will go out. You might have to stay all alone, all by yourself. You may not have cook all the time. तब क्या करोगे? भूखे तो नहीं मर सकते हैं ना. You cannot eat ready-made food all the time. कितने दिन तक खा सकते हैं? So that is why cooking is a life skill. It has nothing to do with gender. But over a period of generations in the past,
किसी ने ऐसा काम शुरू किया कि इसको एक जेंडर बेस्ड स्किल बना दिया, एंड दैट्स व्हाट इट हैज रियली रिड्यूस्ड वुमेन टू जस्ट दिस रोल कि खाना बनाना भी उनका काम है, घर के बाहर जाकर काम करना भी उनका काम है, बच्चों की नर्चरिंग भी उनका ही काम बना दिया, which is not the case, which should not be the case. Again, nurturing is a common duty between two partners. So ये सब चीजें ओपन माइंडेडनेस के अंदर आएंगी कि ये बायसेस जो हैं हमारे, दिस शुड नॉट कम, because you will have so many women working for you, you will have men working for you, you will see these differences coming out all open in the organization also. जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ग्रीवेंस आएंगे, इन सब चीजों से रिलेटेड लोगों के माइंडसेट आपके सामने आएंगे, सो यू नीड टू mediate between them, you need to counsel them. This becomes a very important HR role in the organization. Then feedback. Now giving feedback and receiving feedback is again a very important area. हमारा आधा portion in HR is always related to feedback purely because हम लोग एक business function कम है और support function ज़्यादा है, right? Business function उसके लिए है जहाँ पर हम अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर ला रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन में हम उनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, आई मीन परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, एंड देन ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं. और उसके अलावा इट्स अ सपोर्ट फंक्शन वेयर पीपल आर वर्किंग फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, और आप उनकी हेल्प कर रहे हो आगे अच्छा करने के लिए. यू आर प्रोवाइडिंग देम ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स in terms of the environment should be good, the culture should be good, they should have all the welfare schemes, all the good things, benefits and policies which is utilized for them. So feedback आएगा भी आपके पास और आपको देना भी पड़ेगा. So negative भी हो सकता है feedback, critical भी हो सकता है, positive भी हो सकता है. So you need to learn to how to take the feedbacks and again how to give that feedback also to the employees, right? Ensuring that you're not really just talking about all the bad things about somebody. Of course, everybody would have some good things and some not so good habits, and obviously the bad habits, right? So you need to learn to how to give that feedback and receive it both ways, right? Because बहुत सारे departments heads आते हैं, सर पे खड़े हो जाते हैं कि you're not doing a good job as HR. So you need to take that pill, right? It's a very strong pill of what do you call it? Disrespect, but sometimes you have to take it because it's a support function, and yes, you have to do that. You need to know how to handle these things and you will learn it over a period of time. एक दिन में नहीं आएगा, पहली बारी में बहुत हर्ट होगा, सेकंड टाइम में थोड़ा कम हर्ट होगा, फोर्थ फिफ्थ टाइम तक जाते जाते यू विल बी हैबिचुअल कि ये तो होना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. फिर आता है कॉन्फिडेंस. Now, confidence is related to all other things. That is your open-mindedness, your friendliness, listening ability, and feedback-taking ability, right? And also non-verbal communication. The more confidence you have in your own studies that you have done, your own upbringing, and also what we are going to do in these classes, right? Which is knowledge and information that you will get. The more confidence you have in all these things, the more confident you will look into your jobs the day you will join. You need to understand that what you know, some people might not know it. And even if they know it, the degree of knowing may differ. हमसे ज्यादा जान सकते हैं, हमसे कम जान सकते हैं, उतना नहीं जानेंगे जितना हमें पता है, right? Because हमारी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हमारे पेरेंट्स ने हमें डिफरेंट चीजें सिखाई हैं, हमारे टीचर्स ने हमें अलग चीजें सिखाई हैं, and hence our confidence is totally based upon all those learnings and experiences जो हमने gather की है इतने सालों में. And that confidence you need to now apply in the jobs that you're going to work. And confidence आधे से ज़्यादा आपकी जंग जीतने में help करता है whenever you have that. Right? Overconfidence नहीं होना चाहिए, confidence होना चाहिए. So that has to be looked into deeply. Then non-verbal communication. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है where you don't have to really speak the words. Right? हमारा जो communication का circle होता था when we learned business communication, so it used to say that only 7% of verbal communication is effective. 43 or 53% is non-verbal communication that comes to play. Right? So imagine आपके gestures, आपकी आंखें, आपकी body language can actually talk so much more than what your words are saying. So that has to be taken care of. You have to work really hard on that thing, especially for HRs. Why? Because जब हम policies बनाते हैं company में, especially there is a policy called dress code or discipline policy. अब आपने dress code policy पूरी company के लिए बना दी, but your own dressing sense is not that great.
because you've not learned over a period of time. So imagine you're going, or your body language is not adapting to the dresses you are wearing. It can be any dress, it can be Indian, or it can be Western, it can be a skirt or a trouser, sari, kuch bhi ho sakta hai. But you need to learn to wear it in a manner that you look confident and you look presentable. So that's one part of non-verbal communication. That's very important, that when you're talking about the things, so one of my mentor used to tell me कि HR इतना difficult इसीलिए लगने लगता है लोगों को क्योंकि जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हो वो पहले आपको खुद करके दिखाना पड़ता है. You need to adapt everything on your own and then you can really teach them कि आपको ये सब करना है. So 10,000 employees आपको regularly देखते रहेंगे कंपनी के अंदर that Sakshi is doing this or not. Why is she asking us to do this thing? So you need to be prepared for that all the time, right? So you are under scrutiny. Imagine 10,000 cameras आपके ऊपर हैं. So those 10,000 cameras, 20,000 actually, दो आंखें हैं सबकी तो. So you have to learn to deal with all that, right? So your non-verbal communication plays a very good role. You need to be self-motivated. You need to be very positive when you're going into the organization. You need to look charming, नहीं बोलूँगी मैं, but you need to look presentable and happy all the time so that you can handle those situations. तो आजकल हम कंपनीज के अंदर ये एक लेटेस्ट टॉपिक विच इज गोइंग ऑन दैट सबके पास तो एचआर है बट एचआर के पास एचआर क्यों नहीं है. So there is a requirement of an HR for an HR, right? Because you also need the counseling, you also need that mediation and all that. So that is a good topic that is going on. तो ये आपका why and what हो गया. And now what are we going to cover? इसको छोड़ देते हैं. हाँ, presentation skills is very important. This I guess you know, you've already learned that in the 2 months period, right? Sir ने आपको ये सब बताया ही हुआ है. Analytical skills भी. Time is of essence ये हमने कर लिया है. Problem solving की बात हमने कर ली है. Your pressure handling हो गया है. Yeah, so now आता है आपका कि क्यों HRM हम कर रहे हैं. Why it is required in the organization. Why it is that people are still not able to think that HR can actually turn around the way the business is being done. Right, you will see every year more than 10,000 startups opens up, right? And every year more than that closes down. 10,000 खुलते हैं और 20,000 बंद हो जाते हैं क्योंकि पिछले सालों के भी बंद हो रहे हैं, right? And purely one reason why these companies are closing down is because the founders of these startups do not know how to handle human problems. मेजोरिटी ऑफ द टाइम दो ही चीजें होती है, फंडिंग नहीं मिल पाता है या ह्यूमन प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल होते हैं, राइट? फंडिंग मिलना स्टिल ऑब्वियसली इट्स बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर सेलिंग, बट हैंडलिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन प्रॉब्लम people always think कि सबके बस का होता है, but it is not the case, and that is why human resource management is a specialization in MBA these days. Many institutions are purely focusing on human resource management like XLRI or SEMHRD. These two institutions talk purely about human resource development and human resource management from the point of view that you need to build, you need to apply some portion of psychology in that, you need to be everything, like a mother play a role in the at home. सब कुछ बन जाते हैं हमारी मदर्स, नर्स भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, केयर टेकर भी बन जाते हैं, कुक भी हैं, and everything else. So similar things in HR has to play a role in the organization. Some days you are really hard taskmaster, some days you are discipliner, some days you are just very soft with people because you need to do that. Some days you are very critical because you have to punish somebody or you have to do the layoffs, all those things. So this is very crucial role that people have to play in the organization, right? So now these are few important part of HR that is given in this PPT. Though I would not say कि यही सब चीजें हैं, but these are few major things that you have to do in HR. So it is all based upon employee first of all. So everything that has to do with employee comes under HR. Whether it can be, starting from your talent acquisition, that you're sourcing a right candidate for the organization, right from that point to exit of the person. It's all about people. So whatever an employee needs, you need to take care of that.
पहले दिन से जब आपने उनको सोर्स किया तब उनको क्या चाहिए, हायरिंग के टाइम पे उनको क्या चाहिए, when they are getting into the organization from the very first day, right from the gate to the security guard to the reception, how you are welcoming them, how they are coming inside, उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज क्या है, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गया है नहीं आ गया है, राइट फ्रॉम देयर टू द एंड जब वो एग्जिट कर रहे हैं उन्होंने क्या सीखा है, ऑल दोस थिंग्स इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देन आता है आपका ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्योरली बिकॉज पीपल हैव टू ग्रो. एवरीबडी लुक्स फॉर चैलेंजिंग रोल on a day-to-day basis. They want to learn, they want to grow, they want to upgrade themselves. Imagine कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि मैं 20 साल तक एक ही जैसी जॉब करता रहूं. I won't change, right? So something or the other would change, and that is why this training and development or learning and development is very important for people in the company. Then employee recruitment. Getting the right talent for the organization is always very crucial, right? And the more higher the population India has, the more challenges in terms of getting the right skilled people. Because abhi bhi hamara education system jo hai, and the way organizations are growing and bringing these data learning and artificial intelligence, different kind of things into the system, there is a huge gap. So that gap has to be built, and that is why institutions like YSI and similar such institutions are helping build this gap, so that people can learn about what needs to be done in the organization, what is not being taught in the colleges and universities as well. फिर आता है आपका रिवॉर्डिंग. अब एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर 2 साल से काम कर रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग, लर्निंग भी कर ली उसने, आपको ग्रोथ भी दे दिया आपने उसको, बट आर यू गिविंग हिम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस और नॉट? हम सब वी ऑल नीड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, राइट? चाहे इट इज अ पैट ऑन द बैक or whether it is in a monetary firm or term, or whether it is in a non-monetary term, everybody needs some kind of rewards and recognition. So that comes under HR. You have to design your rewards and recognition in a manner that you're touching upon most of the lives, right? Suppose मान लेते हैं there are 100 people in the company. All these 100 employees will have different kind of motivation to work. Some might be working purely for the financial reasons. Some might be working कि उनको challenging job चाहिए. Some might be working because उनको growth चाहिए. So everybody's reason would be different from one another. So HR का challenge ये होता है कि you have to design something in a manner that at least 60-70% of your employee strength is always satisfied. 100% कभी भी satisfied नहीं होंगे, and we cannot even strive for that. Right? So that is one negative कह लो या इसको the reality of life कह लो, that HR will always go through it, that you cannot satisfy. You are not aloo parantha that you can satisfy 100% people, right? Then business value. Now it's a very important part of HR these days, that what is it that you are worth? HR department का क्या worth है, आपकी क्या वर्थ इन द सेंस कि आप बिजनेस में सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन बन के ना रह जाए. यू नीड टू शो that because of you the company is also in profitability and they can earn much more profit. So right from your first function of creating a manpower planning, which is like a complete plan for the year कि कितने employees कहाँ कौन सी डिपार्टमेंट में जरूरत है, वहां पर आप कैसे कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कैसे अच्छे स्किल्ड लोग लेकर आ सकते हो, so that the profitability can increase. Right from there starts your business value in the organization. Then obviously through performance management system कि आपने उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी performance evaluation कैसे करना है, then training and development, then strategic objectives, then using different kind of good policies and procedures, best practices to keep people happy, because every employee that leaves the organization before 3 years is a cost to the company, right? So you need to evaluate कि एक employee को अगर मैंने रखा है company के अंदर, so वो कितने टाइम तक profitability देना start कर देगा. First 1 year basically goes into learning and understanding. It's only after 1 year approximately people start giving you benefits in terms of salary के बदले वो कुछ काम लेकर आ रहे हैं, whatever things they are doing for their role. So you'll have to see कि कितने टाइम तक आपने उनको salary के बदले वो profitability आई. If that person leaves early, that means again another cost,
You have to find another resource, you have to train another resource. So that's an additional cost that goes into it. So that basically helps in that basically brings the profitability down. Right? Very few organizations calculate that, but it is becoming very popular these days that, what is the business role of human resource in the organization. So that's the business value that you can bring in. Then success. Now, every employee success comes under the purview of human resource management because we are the ones who are responsible for assessing the performances of each and everybody. कितनी productivity हर employee दे रहा है, कितनी performance evaluation हो रही है, कितने time में एक employee ने सीख लिया और benefits देना शुरू कर दिए, profitability देना शुरू कर दी. So that success of everybody in the organization is under your control in terms of designing a very good performance management system. Then strategic objectives. Now, strategic objectives basically is that डाइवर्सिटी को किस तरीके से यूज करोगे आप हर एक जगह पे इन ऑल दीज फंक्शंस, राइट? पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन जस्ट टू टर्म्स, मेल एंड फीमेल. अब मेन एंड वुमेन के अलावा भी देर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज विच इज देयर, कल्चरल है, कास्ट क्रीड के बेसिस पर है, रिलीजियस बेसिस पर है, अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स और इस बेसिस पर भी है. देन डिसेबल लोग हैं जो हैं हमारी पॉपुलेशन का काफी बड़ा हिस्सा, वी डोंट यूटिलाइज देम प्रॉपर्ली इनटू द स्किल्स. सो हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस स्किल्स? ऐसा तो नहीं है ना कि somebody इज डिसेबल, किसी का एक पैर नहीं है, that means they cannot perform any other job that we can perform in the organization. So how you can utilize those people, how you can make them more skilled and so that they can be utilized for every organization is where we need to find the solutions for. Right? So that becomes strategic objective, that how as an HR you keep thinking about bringing more value to your organization. Right? अगर normal लोगों में normal लोग मतलब normal जो human men and women हैं उनसे आपको वो skills नहीं मिल रही हैं. So how are you going to find the right skills for your company? Right? So out of the box thinking जिसको हम कहते हैं, you need to think from that perspective कि कहाँ से क्या लेकर आ सकते हैं, कौन हमारे को benefit दे सकता है. Right? Who can be more creative, who can be more skilled, who can be good in STEM education, किस तरीके से आप उस gaps को fill करोगे. So that's one part of strategic objective. और भी हो सकते हैं strategic objective that your company is thinking of merger or acquisition. Merger with some other large organization, merge हो रहा है उनके साथ या acquisition कर रहे हैं, छोटी और companies को acquire कर रहे हैं. So all those people, all those employees of those other companies who are merging with you, how you as an HR can ensure that they are happy. जो दो कल्चर अलग अलग है, दो अलग अलग कंपनी है, दोनों का कल्चर अलग अलग होगा. हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर दैट उनका कल्चर कैन बी imbibed in yours? कुछ अच्छे पार्ट उनके पास होंगे, कुछ आपके पास है. हाउ एज एन HR हेड यू आर इंश्योरिंग कि इनको स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व कर लिया जाए so that you can develop much better culture for your company, much better environment for your company. So these things comes under strategic objectives. Now, strategic objectives का बहुत बड़ा पोर्शन है जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है. हेंस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. दो फंक्शन, फाइनेंस और HR का काफी पोर्शन गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड आता है. सो जब भी गवर्नमेंट चेंजेस होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, स्टेट वाइज चेंजेस होंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा. सो यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन दैट एरिया. Every 6-7 months minimum wages जो होती हैं कंपनी में देने के लिए, that comes under state act. तो स्टेट टैक्स चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एक सिटी में कितना है, उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस डिसाइड होती हैं. तो सपोज इफ यू आर इन बनारस में यूपी का मिनिमम वेज होगा आई थिंक अराउंड 10,000 समथिंग. एंड इफ यू कम टू दिल्ली इज मच एक्सपेंसिव सिटी, तो वहाँ का है सब अराउंड 12,000 समथिंग. So that's the difference state wise, you will see. So minimum wage act कहता है कि any employee who is unskilled, completely unskilled, labor class जिसको हम कहते हैं, generally जो लोग करते हैं कि manual work कर सकते हैं, उसमें दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना या skills की जरूरत नहीं है, तो उनको आपको कितना wage देना है. So these minimum wages are fixed. Minimum wages 3 तरीके से होते हैं, skilled, unskilled and semi skilled के basis पर. So unskilled is totally somebody who is do not have learning ability, maybe,
but can do manual work is unskilled. सेमी स्किल्ड इज कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ स्किल्स आती हैं, टाइप राइटिंग आ गई, अब छोटा बेसिक काम आ गया, कारपेंटरी वर्क आ गया या प्लम्बिंग वर्क आ गया, छोटा मोटा काम जिसको कहते हैं, तो सेमी स्किल्ड हो गए. Skilled is people generally who have some qualifications, diploma, ITIs, anything, or maybe people like us are comes under skilled. So उन तीनों के बेसिस पर हमारी मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है एज पर गवर्नमेंट की. इतना मिनिमम आपने देना ही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नॉट रियली हैव देम इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट दीज मिनिमम वेजेस, राइट. सो ये मिनिमम वेज ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस हैं जो बहुत सारे हैं, और हर पार्ट ऑफ HR, चाहे ट्रेनिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, रिवॉर्डिंग हो, बिजनेस वैल्यू हो, हर जगह इनका इम्पैक्ट आता है. बोनस एक्ट का इम्पैक्ट आएगा आपके रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे, राइट. कॉर्पोरेट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का आएगा आपके एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट्स के अंदर और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर. स्टैंडिंग ऑर्डर का एक्ट का आएगा हमारी ट्रेनिंग के ऊपर और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर. So all these government regulations and laws and acts have a direct impact on everything in HR. Right? So you need to go through this deeply. Right? So that's what it is. Then आता है आपका challenges in human resource encounter. जो मैंने काफी कुछ बता दी हैं side by side when we were talking about these things. Why don't we take a 5 minutes break and come back? You know? Have some water, go to the loo, and then come back, and then we'll start again. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Right. Let's take 5-6 minutes and then come back and do that. All right.
You guys are back. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, All right. Let me share the screen again. Okay. So we were talking about challenges. So what do you see from this PPT? I mean, this slide. Let's understand from all of you. I've been talking for almost an hour. Let's make it interactive with Shivang, any idea? These are the challenges which will come. What are the challenges that you face in the organization? Mm. On a day-to-day basis while you're handling administration or HR? More more of the part is the grievances. Grievances. Yes. Grievances on what all topics? Because what topic like canteen, Hmm, रोटी अच्छा नहीं है, I know. Very आज दाल common. बहुत Yeah. पानी बहुत था दाल में, Hmm. ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है वो. Any other challenge than these grievances? नहीं होता. We're not able to hear you. Hello. Yeah, now it's better. Hmm. So anything else that you think? Uh, Regarding an operation part, uh, mainly in what we call attendance, किसी का salary कट गया, Okay. What else? बोलेगा According साहब to Sakshi, Anjali, according to you, anything that you think can become a challenge? People? Sorry, give me 1 second. I'll just shut him up. Yeah, sorry. Okay, so according to you, Anjali, Sakshi, anything that you feel is a challenge? ma'am, Yes, to ma'am. handle Yeah, go on, one by one. Anjali, you start first and then we'll come to Sakshi. so ma'am, handling any or lot of challenges like the written here, teamwork, vision, partnership, career. So these work are we have to not only manage our resources but the personals who are working in our organization, and the problem which we face on the daily basis, like Sivang sir said, grievances which are related to the company and the employees they are working. And there are other challenges like growth of company, Right. income from where we are getting profit and from where we are getting loss. And there are also other
people we are hiring to give them training and the requirement of our company. So these things I think that they are act as a problem in any institution or organization, and which should be Right. taken care of. True. Yes, Sakshi. Over Yes, to you ma'am. now. So in organization, there can be challenges between people, like human resource also, that Hmm. there can be disputes between people, teamwork will not Hmm. be there. Then by this, growth hazards, like a company will not grow. There are also problems of the benefits, or you can say, what is that word? Wait, ma'am. Uh, that amenities which company should provide. Hmm. There can be that challenge also, and about income growth of the company. These are the challenges which mainly the organization faces. Hmm. Yes, ma'am. So this only I know. Right. So anything that is written on this slide basically is a very big challenge that you have to encounter as human resource head or manager whenever you become. So right from the growth, whether the company is growing first, and then whether the people in the company is growing or not. They're always up to this that, I'm not learning in this role, what is new for me, how I'm going to stay for the longer period of time. So उसमें क्या करोगे आप लोग? Suppose you are the HR manager of a company and people are coming to you कि मेरी growth कैसे होने वाली है company में. So what do you think you can do for them? Ma'am, first of all, we can check their progress, Sorry. like from the time they have joined the company and the input and output they have given to the company. So Okay. their profile will show us that in which department they are giving more output, and the resources he or she is taking to give the output. And then we can also watch the progress and the resources we are putting. Like if we are putting more resources and we are not getting that much output, then we can also lay off. We can opt for the layoff situation. And if the company requirement is not being fulfilled by the employee we have hired, then also we can opt for layout. And at the same time, we have also think about the upgradation of the company as well as employees. Like as time to time, we have to think like the technological way. The technology is day by day growing, and our employees are up to dated or not. So there are so many work we have to look on that, and on basis of that, we can evaluate the growth and the decline of the company or employee as well. Okay. Good. Yes, Sakshi, you're saying something. Yes, ma'am. So this only that we should uh, see the growth of our teammates and all, that they are growing or not, how much resources they are using, and what are their outputs which they are giving. So this only we have to analyze it, and then our work will be easy. Shivant, any point from you? Majorly it is through training and development to upgrade their skills, and which they are not, we said, expert or something, that we have to identify it and give them that training. Right. That's one way of giving them growth. True. So growth, what you all said is very important, right? People are growing in the company or not, but this is called professional growth. There is another aspect of growth that people look up to, and that is whether I'm personally growing or not. Personal growth कैसे होती है? One is obviously by learning knowledge and information and all that. Another part of our growth is that we all look up to कि हमारा societal status बढ़ता चला जाए हमेशा ही. Right? That's also a growth that we all aspire for. कि अगर आज मेरे पास स्विफ्ट डिजायर है, सो कल मेरे पास मर्सिडीज होगी या BMW होगी.
या any upgradation of the car, from that perspective. 2 बेडरूम का घर है तो 4 बेडरूम का घर भी हो सकता है, होगा आने वाले टाइम में, so my income will improve, so my growth in the society will also change. अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ आज और कल मैं उसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हूँ, सो आई हैव टू सी माई ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कौन से क्लब्स में मैं जा रही हूँ, meeting more high profile people. Now, if I am sporty, I like to play golf. You will see. अब आप देखोगे कभी भी कोई भी मैनेजरियल लेवल बंदा या जूनियर लेवल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली डू नॉट गो आउट एंड प्ले गोल्फ, बिकॉज गोल्फ के साथ ऐसा स्टेटस वो लग गया है कि इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल गेम. पीपल विद गुड अमाउंट ऑफ मनी और स्टेटस ओनली कैन प्ले दैट गेम. ऐसा नहीं है कि आता नहीं होगा खेलना, बट जस्ट दैट एज पार्ट ऑफ द क्लब्स. जितने भी गोल्फ क्लब्स है इंडिया में, फर्स्ट their membership is very expensive. Second, you need to have that kind of a societal status in the society, then only you can go and play. So all these things are symbolic to the growth of human being as a general, in general, right? So you need to look into that perspective of growth. और ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट बन जाता है फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स और ह्यूमन रिसोर्स हेड्स टू सी कि आप किस तरीके से लोगों को रिटेन करके रख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक के लिए, राइट? बिकॉज आपने कंपनी के अंदर तो उनको ग्रोथ दे दिया, प्रोफेशनली डेजिग्नेशन दे दिया, सब दे दिया, बट आप उनको क्लब मेंबरशिप दे रहे हो एज अ बेनिफिट is another growth that they can aspire for. आपने बहुत महंगी गाड़ी दे दी उनको, that is also one of these things. और ड्राइवर दे दिया, गाड़ी उन्होंने खुद खरीद ली या आपने सब्सिडी पे फाइनेंस करा दी. बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सोच सकते हैं, then we can include them in the rewards and benefits. So then people will aspire to stay in the organization for longer कि कंपनी ने मुझे इतना दिया है. So automatically on emotional level as well as another level, they become very loyal towards organization and they don't go. And the better the person, you obviously have a benefit of not letting that person go into from the organization to another. Okay, so this is another aspect of growth. I thought I'll just give you a little gist about. Then what about this part of vision and partnering? How do you think that you can, as an HR manager, can actually become more visionary? Vision, you understand, right? All three of you. What is the definition of vision according to you? Future evaluation based. Good. Yeah. So somebody who can look into the future. Yeah. Sakshi, anything from you? Yes, ma'am. Future evaluation and seeing in future what is good and what is bad for our company. So this only. Right. Shiva, what's your vision of vision? Both company growth and people growth. Right. So vision basically talks about long-term perspective, right? कि company का अब you start a company. Obviously, you're not looking at a company for just 3 years time. If you start your own company, you will see कि 20 साल तक में कहाँ पहुँचेंगे हम, right? So that is the long-term perspective. That's the vision for the company that you see. So anything that is futuristic and long-term is called vision. So now, how do you think as an HR you can work towards vision of the organization and people? Anything that Ma'am, comes to your mind? Yeah. So as a HR of the company, I'll look forward for those employees who are more up to date, who have more technological knowledge, as the technology is moving so fast in these days. So I'll look on them first, and then I'll advance my machinery. I will not advance, but I'll focus on that area that which machinery our company needs in the long run or in future. And Good, yeah. other thing will be I'll hire those employees who are multitasking or kind of thing, who are more skilled than the person who are skilled in one sector or the other. So I'll look on these things as a HR in the company. Right. Good. Yes, Sakshi. Yes, ma'am. So as an HR, I will also see that a person who is willing to stay in the company for future for long term. So I will choose that person
not a person who switched jobs from within 6 to 1 years. So this will also help my company to grow. Okay. What else? No, not now. I can see. Okay. Yes, Shivan, you were saying something. Hello. Yes, Shivan, we can hear you. Hello. We can hear you. You cannot hear us? I guess there's some problem in his audio system. So vision is very important tool in so many things, and not just, I mean, what you're saying is very absolutely correct. Getting the right skilled people in the organization, people who can stay for longer time period, retainership, all those things are very important. But also look into the, I mean, this machinery point was really good. So machinery can be hard equipment, but machinery ke alawa bhi there are other things which are changing, right? So imagine when our parents joined the organization, there was hardly any computer in the organizations, right? If they are working in corporate sector or government sector, फिर कंप्यूटर आया, वो डब्बे वाला कंप्यूटर पीछे जिसके इतना बड़ा वो सब था, right? CPU and all those things. Imagine they took a lot of time to adapt to that system. फिर छोटे वाले पीसीज आ गए, देन लैपटॉप्स आ गए, अब गैजेट्स आ गए हैं कि आप फोन पर ही सब कुछ पढ़ सकते हो, कर सकते हो. So technology is changing so fast, and that as a human resource manager you will have to be up to dated कि अगले 5 साल में क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने वाला है. Keep reading, researching about these things, and then hire people who have that aptitude of changing with time, that aptitude of learning things quick and fast. कि आप ट्रेनिंग तो आप करा दोगे, बट किसी के अंदर लर्निंग एबिलिटी ही नहीं है, सो वो कैसे सीखेगा, राइट? बिकॉज वन थिंग दैट एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल अफ्रेड, एवरीवन इज चेंज. You talk of change and we become so resistant to that. It can be any kind of change, right? So that change management has to be handled by human resource managers in the organization in a manner जैसे हमारी mothers करती हैं घर के अंदर, right? Suppose there is a change of the maid, house help आती है आपके घर में, वो change हो रही है. So imagine how quickly and swiftly your mother's changes according to their requirements and needs and all that. And that comes, that's the faster adaptability. क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा घर चलाना है, so they need some help and they need somebody faster. Similar things has to be looked into the organization in a similar manner कि आपको अपनी कंपनी को चलाना है in a profitable manner. अब उसको चलाने के लिए आपको क्या क्या विजनरी चीजें देखकर काम करना है, सो दैट एडेप्टेबिलिटी टू द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट एंड कल्चर हैज टू कम. एंड बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में दैट पोर्शन इज गिवन टू एचआर टू हैंडल, so hence we have to be upgraded all the time about what technologies are coming. खुद भी सीखेंगे, and then we can always bring that new technologies into the system and new people into the system. अगर अब आपको सपोज आईटी कंपनी में एचआर बना दिया गया, नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू हैव टू हायर पीपल फ्रॉम डेटा लर्निंग. कैसे हायर करोगे, right? Till the time Firstly, you we don't have know to We'll about. also have to know about Yeah. that topic. yeah. Correct. So you may not know coding कैसे करना है, but you have to at least know the jargons. कि आप उनसे सवाल पूछो तो genuine लगे कि you know it. So people should never be able to identify कि साक्षी doesn't know or Anjali doesn't know. They would always say कि आपके एचआर इतना स्मार्ट है कि उसने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो कॉपी पेस्टेड हो, बट यू शुड नो अबाउट देयर आंसर्स एज वेल. कि ये क्वेश्चंस हैं, इनके ये आंसर्स हैं, इस तरीके से मैं करूंगा, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड दिस इज व्हाट इंडस्ट्री एक्सपोजर गिव्स यू. सो जब आप इंडस्ट्री चेंज करते हो वन इंडस्ट्री टू अनदर, एचआर फंक्शन डजंट चेंज दैट मच, राइट? पर इंडस्ट्री चेंज करने से क्या फायदा हो जाता है एज एन एचआर, दैट यू लर्न सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. Now, since I started my own business, we work with across industries. So, जितना HR में हमने job करते हुए नहीं सीखा था, I learned during this time about various products, different kind of machineries, different manufacturing setups,
different kind of products and services. Imagine 107 companies we have catered to in last 7 years, 107 different industries and organization you got to know. Different product, different services, different startup companies. So वो learning ability जब तक आप नहीं लाओगे अपने अंदर, you will not be able to adapt to the systems of these organizations, especially the startup culture. Now startups gives wonderful packages to HR. You grow so fast, जितना बड़ी companies के अंदर सीखने में time लगेगा, because in larger organization, one aspect is you will handle smaller things. So for example, you will only be given recruitments, or you will be given employee relationship, you will be given one portion of specialization. In startups and smaller organization, the benefit is that you can become generalist. You have to know everything, every detail of HR right from the start to the end. You are the manager, you are managing everything. चाहे वो आपको head HR या AVP HR नहीं बुला रहे हैं, but the role you are playing is actually that, right? So your learning is faster, you are challenging yourself much faster, and you are getting to know so many things initially in your career, right? बट हाँ, ये चीज अलग है कि बड़ी कंपनीज के अंदर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बेटर होते हैं, ब्रांड नेम अच्छा होता है, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं. स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा अच्छा है, लर्निंग अच्छी है, एंड ग्रोथ के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं. सो यू नो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. So this is how all these part of challenges that is written here, right from your travel policies बनाना, बोनस किस तरह कैसे देने हैं, कैसे सब लोग इकट्ठे मिलकर, सबसे बड़ा चैलेंज इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, फॉर्मिंग टीम एंड मेकिंग देम वर्क टुगेदर, पार्टनरशिप्स करना, करियर के बारे में सोचना, उनका प्रमोशन, हेल्थ केयर के बारे में सोचना, उनकी मेडिकल सर्विसेज है या नहीं है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में सोचना. वो इसमें नहीं लिखा हुआ, बट दैट लॉ बेसिकली स्पेसिफाइज दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करना लोगों के साथ, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके उसके लिए. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एज अ चैलेंज, एंड द मोर challenges you face in all these aspects, or you prepare yourself for these challenges, the more successful you will become in HRM. Right? फिर आता है नेक्स्ट स्लाइड इज करियर इन HRM. अब आप क्या क्या करियर को एक्चुअली देख सकते हैं, यू नो, फ्रॉम लॉन्गर पर्सपेक्टिव. इफ यू हैव टू रियली थिंक अबाउट being established in human resource management, what exactly can you really look into? So let's start with hiring. Hiring brings, earlier hiring was just one of a very small function of HR, right? When we started, slowly I saw it developing into a different function altogether, completely as a different function. People now are hiring in larger organization, head of talent acquisition, manager of talent acquisition, all recruitment, complete specific team other than HR purely for hiring. Because hiring ultimately is a very common function of marketing your company, selling your company to people, and obviously bringing the right skilled people. So it can come under selling techniques also, and you have to utilize your human resource skills also to get the right people. Right? Now in hiring you can have different kind of, all these names are written here, इसके अलावा भी बहुत कुछ करा जा सकता है. Overseas hiring, which is expats को लेकर आना इंडिया में काम करने के लिए, which is basically foreigners who can work for you. So right kind of skilled people, if that is available in foreigners, then you have to do. So that overseas hiring is a very important aspect of HR. Lot of things you need to understand कि उनके लिए कैसे पैसे दिए, I mean the remuneration and the salary structure would be different. उनके taxes different होंगे, उनको इंडिया में लाने के लिए पेपर वर्क एंड वीजा एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या क्या चीजें लगेंगे. So all this information is very important for an HR to know. Then hiring का एक important part है this assessment and psychometric testing and all that. So second line that you can see नीचे से employee assessment. Employee assessment is very important from the perspective कि आपको किस तरीके से एक एम्प्लॉय को इवेल्युएट करना है that this person is right for my organization. जॉब रोल जो मैंने डिजाइन किया है, उस जॉब रोल के अकॉर्डिंगली इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, और कितनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. जब हम स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंजलि में इसको ले लेते हैं, साक्षी में है ले लेते हैं, बट किस लेवल पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो हम इवेल्युएट ही नहीं कर रहे हैं. सो दिस एम्प्लॉय असेसमेंट हेल्प्स यू इवेल्युएट दैट. कि सपोज आपने एक स्केल बनाया है अपनी कंपनी में 5 का, कि 5 इज द हाईएस्ट मार्क्स.
अब 5 में से हमने इवैल्यूएट किया अंजलि, साक्षी और शिवांग को। हमें लगा कि अंजलि इज एट 2, साक्षी इज एट 3 एंड शिवांग इज हाईएस्ट एट 4। तो हम किसको लेंगे? जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट मैच कर रही है, सो वी विल ऑब्वियसली प्रेफर शिवांग. So this assessment of all the skills and competencies. So imagine एक जॉब के लिए आपको अगर 6 skills चाहिए या competency चाहिए, आप उन सबको assess कर रहे हो, उसमें multiple लोग आए हैं, उन सबका assessment हो रहा है. So it becomes a very important job in itself. Time consuming भी है, efforts भी जा रहे हैं, efficiency and effectiveness भी जा रही है, and then you are hiring the right kind of people for your organization. Accuracy थोड़ी बढ़ जाती है when you do these methods. It's called competency mapping in organization, or you can use psychometric testing assessments for this purpose. तो बहुत सारे psychometric tests available हैं, डिस्क प्रोफाइलिंग से लेकर MBTI से लेकर. There are many such technical skills जिनके लिए special certification या training होना बहुत जरूरी है. You cannot really just use them. इंटरनेट से पढ़ा और यूज कर दिया वाला सिस्टम नहीं होता. You need to take special certification from these institutions जो ये provide कराते हैं, and then start using them. Employee assessment को हम performance management में भी use कर सकते हैं. Sure, please. मैम साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट? आई एम नॉट क्लियर. साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे ही होते हैं जो असेसमेंट टूल्स होते हैं. साइकोमेट्रिक मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है फॉर ह्यूमन बीइंग. सो फॉर एग्जांपल एक रोल को करने के लिए आपको 6 स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंसी, तो वो आपको जज करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक स्किल से रिलेटेड. अब जैसे MBTI है, MBTI में आई थिंक 111 क्वेश्चंस होते हैं दैट यू हैव टू आंसर एज एन एम्प्लॉय. तो आपने उनको 111 को आंसर किया, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन निकल कर आता है कि कितना, कौन से करियर के लिए आप बने हैं. सबसे पहले तो ये निकल कर आता है कि विच करियर इज मोर सुटेबल फॉर यू. Then if you are in a right career, then what are the skills you have, highest number of skills, right? अब हर एक जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए अलग कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है. सो उन कॉम्पिटेंसीज का सेट बनाकर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के अंदर. उसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक. बहुत सारे रेडीमेड टूल्स भी हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के. आप अपनी कंपनी के लिए खुद भी बना सकते हो अगर आप सर्टिफाइड हो बनाने के लिए, असेसर हो. It's a very technical job. From where we can take the certification and how does it बहुत work? सारे इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. Like government institution? गवर्नमेंट तो कम होंगे, प्राइवेट ज्यादा है. Okay, so I'll let you know. I'll let you know which are good ones. I can help you out if you want to go into that. वो स्पेसिफिक आपको, बट उसमें भी क्या होता है कि 1-2 आप ले सकते हो सर्टिफिकेट, सारे नहीं ले सकते हो. यू कैन बिकम मास्टर ऑफ 1 or 2 which are more popular. Right? So डेल कार्नेगी का है, MBTI है, तो बहुत सारे ऐसे वाले हैं. I'll tell you which institutes are good, which are giving certifications in India. As a part of the course, we generally keep giving that information also. तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, in case I forget, ग्रुप में डाल देना, so then I'll remember it. फिर similarly आता है payroll and compliance. Now payroll and compliance is you need to know and understand government policies. बिकॉज हमारा पेरोल मतलब सैलरीज और हमारा जो कॉम्पनसेशन है अगेन रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज. हर साल जब बजट चेंज होता है 1 फरवरी को, बजट के साथ साथ बजट के अंदर आपको श्योर की आइडिया होगा कि इनकम टैक्स रूल्स चेंज होते हैं. कुछ कंपनी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, वो चेंज होती हैं. कुछ कंपनीज को रिबेट दिया जाता है, कुछ कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज्यादा वो दिया जाता है. सो वो सब चीजें आपकी सैलरी पर इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं. So that has to be learned by every HR and finance both, so that you can understand कि किस तरीके से पेरोल पर. और मिनिमम वेज एक्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी हर 6-7 महीने में चेंज होता है. जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा वहां पर लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग में, यू विल हैव टू इंक्रीज सैलरी लिटिल बिट. सो हर साल जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे कंपनी में, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट करेंगे, सपोज एक एम्प्लॉय बिल्कुल खराब है, कुछ नहीं किया उसने, सेम काम करता आ रहा है हमेशा से, नथिंग न्यू, नथिंग, नो ग्रोथ, नो इवैल्यूएशन, नो लर्निंग एबिलिटी, बट स्टिल बिकॉज महंगाई बढ़ रही है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू टू स्टिल गिव हिम 5%, 6% ऑफ अप्रेजल. सो दैट हैज टू हैपन एज पर. सो मिनिमम आपको चेक करना पड़ेगा कि हर साल के लिए मिनिमम कितना अप्रेजल है, वैल्यू है,
totally depending upon the cost of living increase. देन आता है, और compliances में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, PF, ESI, gratuity, ये सब चीजें you need to know because these are government benefits and you have to incorporate them in your company. Generally अब जब आप company join करोगे ये सब होगा already वहाँ पर, but how to calculate and all that thing we will teach you. It's a part of the course. So we will take you through that salary and payroll part of it, and you will understand कि कैसे gratuity calculate होती है, कैसे PF calculation होता है, क्या percentage deducती है, all those things. So usually इतनी जल्दी ये change नहीं करती है government, but थोड़ा बहुत जहाँ पर भी change होता है, so then we can incorporate that. फिर है आपका temporary staffing. So now temporary staffing again is a very important area of hiring in the organization because बहुत सारी companies हैं. For example, manufacturing companies हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारे एम्प्लॉयज को अपने पेरोल पर नहीं रख सकते हैं. अपने पेरोल मतलब अपनी कंपनी के रोल्स पे. सो व्हाट दे प्रेफर हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थर्ड पार्टी के थ्रू. तो थर्ड पार्टी एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप PF ESI हैंडल करते हैं. उनका काम होता है. क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज कई रोल ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग बहुत जल्दी चेंज होते हैं, स्पेशली द लेबर वर्कफोर्स. अब लेबर वर्कफोर्स का कोई गारंटी नहीं होता. ईद आ गई, बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मुस्लिम्स काम करते हैं, तो वो पूरा रमजान का महीना छुट्टी लेकर चले जाते हैं. सो देन कंपनी सफर्स बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. अब वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं थर्ड पार्टी के लिए या टेम्परेरी स्टाफिंग के लिए, तो उनकी हेडेक है, वो कहाँ से लेकर आएंगे एम्प्लॉयज. इट्स नॉट योर हेडेक एनीमोर एज एन HR. So that's when we do this. Again, temporary staffing is useful for industries, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, कि आपको इंक्रीज करना है, नई दवाई मार्केट पे इंट्रोड्यूस करनी है. उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारे MRs चाहिए ऑल ओवर इंडिया में. अब ऑल ओवर इंडिया में हायरिंग करना शुरू करेंगे पेरोल पे तो मुश्किल हो जाएगा. यू नीड टू फॉलो द रूल्स, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, ऑल दैट. सो व्हाट दे डू इज गिव इट टू द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज and then they hire people, they give you people, they work as a full time employee जैसे बाकी employee काम करते हैं, but आपको उनकी सरदर्दी थोड़ी कम है in terms of salary management and PF and ESI, hiring का टेंशन, ये सब खत्म. एक गया छोड़ के, तो it's the responsibility of the third party employer to give it to you, so you don't have to really waste your time on this. So generally junior level staffing जहाँ पर बहुत ज्यादा execution level होता है और changes होते हैं, लोग frequently job बदलते रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि 1000-2000 रुपए के लिए भी लोग जॉब चेंज कर लेते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. These guys are not really much loyal and you face lot of challenges in hiring these guys. इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस यहीं पर ही है, सबसे ज्यादा सरदर्दी यहीं पर ही है. So that's when people prefer, larger companies generally prefer कि थर्ड पार्टी को दे दिया ये रोल, एंड देन ये देखना होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं हो, उसी रोल्स को आप थर्ड पार्टी पे दे सकते हो या टेम्परेरी स्टाफिंग पे दे सकते हो. देन आता है फ्रंटलाइन हायरिंग. फ्रंटलाइन हायरिंग इज द सेम, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि MRs रख लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने या जूनियर लेवल रोल्स रख लिए. तो फ्रंटलाइन हायरिंग अलग ही डिफरेंट लेवल पर होती है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू हो सकती है. हर स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहाँ पर हर ग्रेजुएट को या ITI डिप्लोमा होल्डर्स को अपना नाम जाके रजिस्टर करना होता है. सो यू कैन इजिली टेक दैट डेटा, गेट इन टच विद देम. या फ्रंटलाइन हायरिंग आप इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस से कर सकते हो जहाँ पर फ्रेशर्स निकल रहे हैं, BCom BA वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं. अगर बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक एबिलिटी, तो वहां से कर सकते हैं. मशीनरी पे काम करने के लिए चाहिए तो ITI से ले सकते हैं. ITI जनरली गिव देम दैट डिप्लोमा इस मशीनरी पे काम करने का, सिविल से, मैकेनिकल से रिलेटेड, तो वो आपको मिल सकते हैं वहां से. सो फ्रंटलाइन हायरिंग इज बेसिकली दैट हायरिंग वेयर इज द बेसिक लेवल, जहां से स्टार्ट हो रहा है कंपनी के अंदर, वहां से आप उनको हैंडल कर सकते हैं, राइट. देन एग्जीक्यूटिव सर्च. नाउ एग्जीक्यूटिव सर्च इज वेरी हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ CXO hiring also is called. A CXO hiring is basically done for the larger organization for senior level role. So right from AVPs to VPs to directors of the organization. So there are many firms which basically specializes in getting executive search. So you can always start opening your own agency. You can start with that. You can get specialization in that, get in touch with good people on LinkedIn, create your own database, and then you can do executive search. Executive search और leadership hiring में बहुत difference नहीं है.
दे आर बोथ काइंडली रिलेटेड, बट लीडरशिप हायरिंग में ये है कि जनरली आप सिर्फ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हायर कर रहे हो, सो लाइक CHROs, chief of human resource, chief CEOs, all these people you're hiring for the organizations, right? उनका परसेंटेज डिफर होता है, बिजनेस ही टोटली डिफरेंट है वहाँ का, उस चीज को हायर करना ही एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज इज रिक्वायर्ड. I need to do more to LinkedIn hiring. LinkedIn, maybe people may not be interested because these guys generally are not looking for job. You have to create that need in them that we need you, so you come and join our organization. Right? So you need to really build that kind of a structure. You need to start talking in that language. That why my company is better than your current company. If you are the HR, and then you have to hire them. So वो skills जो senior level पर चाहिए is different. You cannot evaluate them in one interview. So for them, the interview process is also different. It's more called theory or practical interview than theory. Interview to put across a lot of case studies in front of them. कि suppose organization में ऐसी situation होगी, so what is your take on that? So you then judge or assess their ability कि वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं. You as an HR needs to be prepared on those answers beforehand कि अगर वो ऐसा आंसर दे रहा है तो ये abilities दिखाई दे रही है, अगर वो आंसर भी दे रहा है तो ये ability दिखाई दे रही है. So you have to work on that beforehand. So that's a very crucial kind of a role. Usually over a period of time, जब आप hiring में बहुत time लगाते हैं organizations के अंदर, you learn these skills automatically, right? But there are now specialized courses which are available. Like IIMs take you through specialized courses only for leadership hiring, AICTE hiring. The larger institutes have these kind of specialized courses. एक महीने के, दो महीने के, एक हफ्ते के courses हैं that you can go and do that and become master in that, right? अपना business start करना हो, so leadership hiring and executive search is best. नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, डेटाबेस अच्छा होना चाहिए हर एक हायरिंग पर. बाकी नॉर्मल हायरिंग अगर आप करते हैं एज एन एजेंसी, आपको 1 मंथ सैलरी मिलता है या 8.33% मिलता है. बट व्हेन यू डू लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव सर्च हायरिंग, you get easily 15% to 24%, anything you can ask for depending on the role. So एक इंसान की सैलरी मान लेते हैं, अगर जनरली इस लेवल पर 2 करोड़ 3 करोड़ की सैलरीज होती है साल की, तो आपने 2 करोड़ की कोई हायरिंग करी, उसका 15% आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज योर प्रॉफिट डायरेक्टली. उसमें से आपकी छोटी मोटी कॉस्ट भी होंगी, लिंक्डइन सर्च किया, थोड़ा बहुत पैसा पीछा इधर किया, स्टिल इट बिकम्स वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर पीपल, राइट? बट यू नीड वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. थोड़ा टफ है, टाइम लगता है, बट यू गेट इट. सो ये आपका हो गया हायरिंग में अगर करियर बनाना है. देन आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. अगर आपने करियर बनाना है HR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें है ऑनलाइन असेसमेंट सर्विस, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी, एम्प्लॉय असेसमेंट. सो ऑनलाइन असेसमेंट्स भी होती हैं आजकल, वेयर यू कैन यूटिलाइज इट फॉर कंपनी इन टर्म्स ऑफ सीइंग दैट पीपल आर हैप्पी और नॉट. तो इनको हम कहते हैं ESAT सर्विस या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्विस. You can run these surveys automatically. Questions होते हैं, people answer them and then they give automatically result कि कितने percentage of लोग खुश हैं आपकी कंपनी से on various days. It can be environment based, rewards recognition based, culture based, job role based और manager से कितने, because सबसे ज्यादा लोग परेशान अपने manager से छोड़कर ही जाते हैं companies usually. So it's a combination of questions which is put into these surveys, and then you can once develop your own questionnaire, also assessment surveys. So it's not really difficult. There are many softwares which are available now, ready-made, where you can change your questions and you can ask those questions to you. इसमें AI का यूज होता है, so that is why we are doing that. Then human resource management system, again HRMS के बहुत सारे systems है, जिसके अंदर पूरा आपको एक बार फर्स्ट टाइम में जो भी डेटाबेस है एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो आपको पुट करना होता है. Right from their name, father's name, their last salary, their last job, date of joining, everything related to them. कौन सी सिटी से है, क्या है, ये है, वो है, सारी information आपने एक बार put कर दी. This softwares you can again get it created for yourself in the company or you can ready-made buy it. It helps you in decision making, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, forecasting और visionary होने में help करता है. पिछले 10 साल का डेटा उसमें डाला होगा, तो इट विल गिव यू रिपोर्ट. सपोज आप उस पर रिपोर्ट करेंगे क्लिक कि मुझे एनालिसिस लेना है, हाउ मेनी पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल लीव द कंपनी सून.
सो वो आपको ये बता देगा कि जनरली इन शहरों से आए हुए लोग छोड़ के जाते हैं, इस डेमोग्राफिक के, मतलब उनकी एज ग्रुप ये होती है, इस तरीके की स्किल्स होती हैं। तो वो एक कॉमन सा डेटा जहां पर भी आ रहा होगा वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। सो इट विल हेल्प यू इन टेकिंग फ्यूचरिस्टिक हायरिंग डिसीजन, कि इस तरीके के लोग दोबारा आएंगे आपके सामने तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खटकेगा कि मेरी कंपनी जनरली छोड़ जाते हैं ऐसे लोग, so I will right now not hire these people, चाहे स्किल लग रहे हो। So this is what we call human resource management system or human resource information system, which helps in taking faster decision makings. AI powered होता है जनरली सॉफ्टवेयर के अंदर, so you don't really have to work on the manual reports, पर आप एक्सेल शीट्स में भी कर सकते हैं। People used to do in Excel sheets जब हम लोग शुरू में जॉब करते थे। तो देन आता है आपका हायरिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। अगेन हायरिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर्स, राइट। हायरिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस अब क्या है, इनको हम कहते हैं ATS सिस्टम ऑल्सो। ATS मतलब एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम, कि सपोज आपने एक जॉब पोस्ट करी कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उससे 20 CVs आए आपके पास, 20 रिज्यूमेज आपने कलेक्ट कर लिए। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, हमें मैनुअली पढ़ने पड़ते थे 20 CVs की कौन सा जॉब रोल से मैच कर रहा है। ATS के थ्रू अब वो क्या करता है कि आपने जॉब रोल ATS में डाला हुआ है इस हायरिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन में ऑलरेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रोल जो भी है, ऑटोमेटिकली उसने इवेल्युएट कर लिया। उन 20 सीवीज में से जो कीवर्ड सबसे क्लोज लगे उसको, उसने आपको उसमें से वो 7 सीवीज निकाल के दे दिए कि these 7 सीवीज आर मच बेटर, रेस्ट 14 डू नॉट हैव दोस रिक्वायर्ड स्किल्स और जार्गन्स और रोल के बारे में जो भी आपने लिखा मैच करता हुआ। सो यू हैव नाउ much lesser job to do, rather than meeting or talking to 20 people. You just have to work on these 7 people now. So ATS helps you in that. Imagine the companies who hire thousands of employees really use these software systems so that unka human effort या manual effort कम हो जाए. So you can easily evaluate those things, right? So this is called hiring management system. फिर आता है job portals. Job portals आपको पता ही है, नौकरी, शाइन, लिंक्डइन, any other that kind of, there are many more now, Indeed हो गया, बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने सब हो गए अब तो। Many startups have started opening their own job portals. So all these job portals helps you. They have database, you have a job, they match the job with the people they have in system, you interview them and do that, right, to form the workforce. So that's technology point of view. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर जॉब पोर्टल इज बिकमिंग मच बेटर various companies. So जो startups सब कर रही है काम in a different manner, they really are much more better way in terms of giving you the right match for your job. फिर आता है ऐसे ही ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसे ही है, कैंपस टू कॉर्पोरेट इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन YSI. You are right from the campus here, you have to go and work in the corporate. We are bridging that gap. We are giving you that training which is required. So there are many such companies. Some organizations have their own internal campus for that. So like Infosys or HCL, all these larger organizations have incorporated their own institutions internally in their organizations, जहाँ वो हायर करते हैं फ्रेशर्स को, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं इसी तरीके का जैसे हम आपको दे रहे हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेशलाइजेशन, IT है तो IT से रिलेटेड, HR है तो उससे रिलेटेड, दे ग्रिल देम, दे गिव देम दैट ट्रेनिंग। जब वो लगता है कि हमारी स्किल्स मैच होने लग गई है रोल के साथ, देन दे टेक देम फुल टाइम इनटू द रोल। फिर है एग्जीक्यूटिव कोचिंग। एग्जीक्यूटिव कोचिंग इज जनरली यूज्ड फॉर सीनियर लेवल पीपल, लीडरशिप लेवल पीपल। सो इट इज जनरली 1-to-1, और अगर ग्रुप में भी दे रहे हैं तब भी इट इज वेरी स्पेसिफिकली ऑन वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। सो फॉर एग्जाम्पल, अब कोई VP है आपकी कंपनी में, बहुत साल से काम कर रहा है, नाउ VP को CEO बनाना है। अब 4 VPs हैं, एक HR का VP हो गया, एक मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का और एक सेल्स का। इन चारों में से CEO की पोजीशन एक ही रहती है, राइट। मोस्ट कंपनीज है 1 CEO। सो आपको इन चारों में से चूज करना है कि who will become the CEO. So what you will do is you will hire an executive coach, generally outside companies के होते हैं जिनके पास कोचिंग का सर्टिफिकेशन होता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं कोचिंग में। सो नाउ दीज कोचेस हेल्प देम, ब्रिंग देम टू अ लेवल कि जहां वो इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि CEO के लिए कौन रेडी है, और किसी को थोड़ी बहुत क्या ट्रेनिंग की जरूरत है वो ट्रेनिंग दे देते हैं, एंड देन दे मेक देम बेटर CEOs, राइट। सो कंप्लीट इनका प्रोग्राम चलता है 2 से 6 महीने का। IIMs के अंदर ये प्रोग्राम रेडीमेड अवेलेबल है, अगर कंपनीज भेजती है वहां पर।
सो अगर वो इन चारों में से 2 को आइडेंटिफाई कर लेती है, उन 2 को बाहर पढ़ने भेज देते हैं या कोचिंग के लिए भेज देते हैं, एंड देन दे सी कि किसने बेटर परफॉर्म किया, उसको सीईओ बना दिया. सो दैट्स द राइट वे ऑफ चूजिंग, बिकॉज every organization के अंदर CEO requires a knowledge of everything, right? From sales, marketing, HR, finance, leadership, people management, uh, how to progress company, become visionary, larger perspective में. So all those things. So you'll have to see who has the right ability. So right scientific way of doing this is basically through executive coaching. एग्जीक्यूटिव कोचिंग और भी सीनियर लेवल पे काम आ सकती है, जरूरी नहीं है कि VP to CEO. एनी यू वांट टू मेक सम पीपल फ्रॉम सीनियर मैनेजर डायरेक्टर लेवल टू VP लेवल, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं. आउटबाउंड ट्रेनिंग इज यूजुअली डन बाय ऑर्गेनाइजेशंस, जहां वो बाहर ले जाती हैं अपने प्रेमिसेस से लोगों को. सो फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारी कंपनीज ऋषिकेश ले जाती हैं, मसूरी ले गए अपनी कंपनीज को, एम्प्लॉय को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए. सो इट्स बेसिकली आउटबाउंड ट्रेनिंग, जहां पर वो कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है, सो दैट पीपल आर नॉट रियली बिजी इन देयर डे टू डे वर्क. वहां से दूर हटकर हो जाएगा, दे कैन बॉन्ड वेल टुगेदर, थोड़ी टीम बिल्डिंग हो जाती है, एंड देन दे कैन रियली ट्रेन देम ऑन वेरियस थिंग्स. 1 साल की प्लानिंग भी हो जाती है. Now you will see this is the time period जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है अप्रैल में जून आर वेरी हाई व्हेन कंपनीज टेक देयर एम्प्लॉयज आउट फॉर आउटबाउंड ट्रेनिंग. Then leadership training, again very similar to executive coaching, but coaching generally 1-to-1 दी जाती है, training can be given in group. So leadership training is for all the people who are becoming leaders in the organization, and leaders generally does not mean कि बहुत senior position है. Leader can be anybody जिसको अपने अंदर एक टीम को हैंडल करना है. And because once you become manager, you're also a leader automatically. You're leading a group of 5 people, 10 people. अब उनको आपको कैसे लीड करना है becomes very difficult. जनरली कंपनीज क्या करती हैं, प्रमोशन दे दिया वहीं काम खत्म, ट्रेनिंग देना भूल जाती हैं. अब यू आर एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर ऑल थ्रू योर 5-7 years. आपने अकेले काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, एवरी ईयर आपको अप्रेजल अच्छा मिला, बोनस मिला, सब मिला, बट आपने अकेले काम किया है एज अ पार्ट ऑफ द टीम. अब सडनली आप एक मैनेजर बन गए हो जिसको 6 लोगों को मैनेज करना है, आपको मैनेजमेंट स्किल नहीं आती, पीपल मैनेजमेंट स्किल 0 है. हाउ डू यू थिंक देन यू विल बी एबल टू? और फिर आप फेल होना शुरू कर देते हो, अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है, कंपनी की टीम की भी परफॉर्मेंस डाउन जाती है. सो दैट्स व्हेन दीज लीडरशिप ट्रेनिंग्स आर वेरी हेल्पफुल. यूजुअली दे टेल देम अबाउट टीम बिल्डिंग, टीम इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, how you can delegate job roles to various people. So ये सब चीजों का mix होता है इन trainings के अंदर, so that people can learn the art of becoming a good manager. फिर है content development. Content development is a very big portion of giving good amount of learning and development, because training कैसे दी जा सकती है जब तक आपके पास content नहीं होगा. So to develop that content is very important for every leadership, every company who is into training. अगर अपनी एजेंसी चला रहे हैं तब भी, आप कंपनी के अंदर लीडरशिप एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तब भी. सो कंटेंट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस which has to which has to happen in the organization on a regular basis. So उसके लिए अलग से टीम होती है. Generally you need graphic people who can design good PPTs, present it in a different manner altogether. You need video makers, editors, writers who can write good content, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. अगर HR से रिलेटेड ट्रेनिंग है तो HR का एक्सपर्ट, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का. सिमिलरली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, हम SMEs कहते हैं उनको इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो वो सब चाहिए होता है आपको कंटेंट डेवलपमेंट के लिए. फिर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टूल. अगेन इस तरीके से ह्यूमन हायरिंग मैनेजमेंट सोल्यूशन है, इसी तरीके से ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है. कितने लोगों को ट्रेनिंग मिल गई साल में, कितनों को नहीं मिली, कितने घंटे की ट्रेनिंग सबने अटेंड करी है, कितना बजट लगा है उनकी ट्रेनिंग में. तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं. जस्ट नीड टू पुट द डेटा, राइट. फिर आते कंसल्टिंग. कंसल्टिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ HR आउट ऑफ ऑल दीज 4. मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, बट कंसल्टिंग इज द मोस्ट enjoyable पार्ट ऑफ दिस थिंग. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटेंसी मैपिंग. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. कॉम्पिटेंसी मैपिंग जिसका मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक रोल के लिए 5 स्किल है,
हर 5 स्किल्स के अंदर आपको कॉम्पिटेंसी देखनी है 1 to 5 लेवल पर किसकी कितनी मैच हो रही है। इससे आपको क्या हेल्प हो जाती है फर्स्ट टाइम करने से व्हेन यू आर हायरिंग, जब भी आप अप्रेजल कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं एम्प्लॉय का, यू विल सी कि इसकी स्किल 3 थी, 1 साल बाद 4 हो गई है, दूसरे साल में 5 हो गई है। इट विल हेल्प यू इन प्रमोशन, करियर प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट और लीडरशिप ट्रेनिंग्स, सक्सेशन प्लानिंग कि आपने कैसे उसको रोल में आगे देना है, सीईओ कैसे बनाना है, वीवीपी कैसे बनाना है, ऑल दिस थिंग्स में कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज वेरी यूजफुल टूल। performance management like we talked about कि you have to develop a system or create a system or manage a system of performance management in the organization कि सारे कंपनीज का कल्चर देखकर किस तरीके का टूल या टेक्निक जो भी हमारे पास है एचआर में हम पढ़ेंगे वो कौन सी यूटिलाइज की जा सकती है कंपनी के हिसाब से। देन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सर्वे की बहुत आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी है कि नहीं है। दिस हैप्पीनेस सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज डेज, स्पेशली लास्ट 7-8 years में mental health has become a major problem in organization, not just in organization, overall वैसे ही, right? People are unemployed, people are not skilled, they are not getting job पे भी जा रहे हैं तो रोबोट बन गए हैं, रोबोट बन के 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, not happy, various reasons of not being happy. So how as an HR you can become their happiness manager as well. You will see बहुत सारी कंपनीज ने एक्चुअली अपने एचआर का नाम चेंज करके हैप्पीनेस मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स हैप्पीनेस ऐसे वाले उससे रिलेटेड रख दिया है, या एक रोल क्रिएट कर दिया है जिसका काम ही यही है कि दे हैव टू मैप whether people are happy in the organization or not and how we can actually make them happy. And happiness is nothing to do just with professional, it can also happen from personal level also. So आप personal level पर फिर क्या चीजें कर सकते हो that the employee can actually be happy towards everything, right? So इसीलिए meditation programs, yogas, different kind of things that you can do to increase their ability of happiness and all that can be useful for happiness survey, right? Health surveys generally ऐसे ही किए जाते हैं जैसे हमने ये टेक्नोलॉजी में पढ़ा था ऑनलाइन असेसमेंट सर्विस, so we can see satisfaction surveys run करके कितनी health of happiness index पे आ रही है हमारी। फिर सेल्फ मैनेज टीम्स, कंसल्टिंग में सेल्फ मैनेज टीम्स मतलब जहां पर दे डोंट नीड अ बॉस ऑल द टाइम हर चीज को माइक्रो मैनेज करने के लिए। सो दीज टीम्स आर डेवलप्ड और क्रिएटेड इन अ मैनर, इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से दी जाती है दैट दे आर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम, ओनरशिप लेते हैं, दैट सेंस ऑफ ओनरशिप इज रियली हाई कि माई वर्क इज दिस मच एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस मच टुडे, whether I'm working from home, whether I'm working from office, whether wherever I am. So you will see कि COVID के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। Many organizations are also open कि लोग अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं या 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 4 दिन घर पर हैं। People have started working from हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमालय में रहकर वो लोग काम कर रहे हैं because they are happier. Air अच्छी है, atmosphere अच्छा है, you have नदी and रेत and everything around you. And they are still working. You have laptops, your work permits you to work from there. So these self-managed teams is basically those teams where you can create that sense of ownership in them, that you motivate yourself, complete your work, this is your responsibility, bring the result, simple as that. So that managed teams are really something that can come with consulting. Why we are calling it consulting? Because over a period of time आपको इनको coach और consult करके ही इनको improve करना पड़ता है। Then HR audit and excellence. HR audit and excellence is basically to see आपका HR department कैसा perform कर रहा है company के अंदर. So you'll have to see कि आपके जितने policies हैं, procedures हैं, are they really making an impact the way they should be making an impact? एक तो इसका result आ जाता है employee satisfaction survey से, happiness index जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे निकल कर आ जाएगा. So you will have to keep looking into auditing your own HR department yourself or hire an expert. So जैसे अब हम लोग जब से I started my own company, people call us just for this purpose also कि आप आके audit कर जाओ, just tell us कि कहाँ gaps आ रहे हैं, give us the list of some companies, then hire us कि we can remove those gaps also, and some companies just want that report कि excellence कैसे हम achieve कर सकते हैं, then they do their own effort into that. So that's what consulting is all about. फिर है HR process outsourcing, मतलब कंपनी के अंदर
प्रोसेसेस बहुत टाइम से रन कर रहे हैं, पॉलिसीज बहुत टाइम से रन कर रही हैं. They have not changed according to the systems and a new generation which is coming in. So, youngsters who are now joining the workforce in last 2-3 years are different generation altogether. Right? Different generation इसलिए भी है because उन्होंने कोविड भी देख लिया है. So they know कि घर से बैठकर भी काम उतने अच्छे से हो सकता है जितना ऑफिस जाकर. So वो commuting time they don't want to waste. So वो process outsourcing का मतलब है कि for organization you are creating such kind of processes which are really helpful in terms of bringing maximum benefits in the organization for everybody. Right? So outsourcing का मतलब है हमने किसी और को दे दिया बाहर. So companies like us, the one I am heading, we do this. That your organization is a smaller company, startup है, आपके पास HR senior level पर हायर करने की इनकम नहीं है, पैसे नहीं है उनको देने के लिए, because generally people charge 50-60 lakhs per annum kind of a salary. So they hire us, we give them very good budget, अच्छे amount में we give them good amount of work. So they become very happy, we become happy. 6 महीने में उनका अच्छा setup हो जाता है. Then we come out, we give them a junior resource to run that HR. And then we keep them consulting. So this is a very important portion. Smaller organization से MSME में या expert किसी के पास expertise हो, so larger organization में भी HR outsourcing काम आ सकता है. Then learn and earn. So learn and earn का मतलब है consulting के अंदर that you start your own organization. साथ साथ आप learning भी करे जा रहे हो, earning भी करे जा रहे हो. For example, like I told you कि hiring is one area where you can start your own agency at any point in time. The moment you have your good data network on LinkedIn or any which ways, you know you are capable of bringing people. You are very good at people management and talking to people and convincing them. You can start that. So side by side आपकी learning चल रही है, which is your graduation, post graduation, whatever you're doing, and side by side you're earning. That can happen in any area of HR. Right? So that's how you can create a good career in HR and for long-term perspective. These are all. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. Obviously, we cannot bring all of them here, but majority of the time, these are the 4 areas. CHTT जिसको हम कहते हैं, where you can create your. Then this last slide talks about क्या-क्या roles होते हैं company के अंदर, depending upon the function of HR you are handling. So employee relations के अंदर किस तरीके से hierarchy चलती है, relationship specialist, then senior relationship specialist, relationship manager, director of employee relations, VP of employee relations. Employee relations का क्या काम है? To see whether people are happy, their welfare activities are being done on a proper time, all these canteen and administration function is being done. So their job is to maintain good relationship with employees and see whether they are motivated, happy, morale high, loyal, staying in the company for a longer period of time, right? Day-to-day HR activity. Recruitment and talent acquisition, you all know, hiring से related वाला सारा system है, sourcing से लेकर. So right starts from recruitment specialist. Designation change हो सकती है as per organization. Role same रहता है. Recruitment specialist मतलब somebody who is bringing good people, frontliners in the. Then ऐसे ही वो role senior level तक चला जाएगा. Then compensation and benefit is another area. Compensation and benefit is basically deciding what kind of salaries, what kind of benefits, what kind of rewards and recognition systems you can bring to the organization. It requires a good amount of knowledge towards the financial side of it as well. Government policies, financial side, understanding किस तरीके से formula लगेगा, किस तरीके से काम होगा, and then utilizing it for the salaries of people. Creating the structure जहाँ पर लोग अपना tax थोड़ा बड़ा बचा सकें, because the moment you are earning 30 lakh plus, tax में बहुत बड़ा portion चला जाता है, right? So you need to start saving your tax. थोड़ा बहुत ही government ने बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं दिया है investment के basis पर. 2 लाख की investment भी करोगे 30 लाख में से, तब भी आप बहुत ज़्यादा tax नहीं बचा पाते. So your compensation is designed in the manner कि आपकी taxable salary कम दिखने लगती है, benefits ज़्यादा दिखने मिल जाते हैं. 1 second. Sorry, these dogs are raining outside and they are not happy sitting inside.
Okay, so compensation and benefit is this. Then you have different level as per the experience that you gain. So you can become compensation benefit specialist with just 1 year experience or maybe as a fresher अगर knowledge है उसके बारे में कुछ special certification भी आए. And then you can obviously grow up to director and VP of compensation and benefit. Then people and culture talk about that what kind of things that you are doing to improve the culture of the organization. बिकॉज अल्टीमेटली लोगों का जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट और कल्चर की बात करते हैं इट कम्स फ्रॉम पीपल राइट हाउ इज योर हार्ट एंड सोल इनटू द सिस्टम और नॉट अगर आप ऊपर से खुश लग रहे हो और अंदर से यू आर नॉट हैप्पी द लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स सम थिंग्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन so all these things really impact your day to day productivity आपका जॉब में कितना टाइम जा रहा है और आप कर नहीं पा रहे हो 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी भी in the most efficient manner. So for example, I tell you, during COVID time period, we were doing a lot of training and development for companies because घर से काम कर रहे थे बहुत सारी companies. So we were hired for that purpose for mental health related trainings. So what people facing? So in one of such training, we found out कि major reason क्या है? We were just talking about. So there were 50 employees. They were talking about कि क्या क्या reasons हो सकते हैं anxiety और stress के from working from home. So हमने कंपनीज में सब कुछ तैयार किया था उनकी कंपनी की एचआर ने हमारे साथ मिलकर हमने सब चीजें प्रोविजन हैंडल करा था कि इसका आंसर ये देंगे उसका आंसर ये होगा ये सोल्यूशन हो जाएगा दिस प्रॉब्लम वी डिड नॉट इवन थॉट ऑफ सो दिस गर्ल सेड दैट यू नो आई एम अ वर्किंग लेडी आई यूज्ड टू कम टू ऑफिस एवरी डे एंड आई यूज्ड टू वर्क बट आई स्टे इन अ 1 bedroom अपार्टमेंट अ 1 bedroom अपार्टमेंट यू कैन थिंक कि कितना होगा एक बेडरूम है एक छोटा सा रूम है किचन बाथरूम टॉयलेट दैट्स ऑल and I have 6 members in my family. I don't have a place in my home जहाँ से मैं बैठ के meetings attend कर सकूँ. Laptop है, it's fine, company ने दिया है, but there is no space. COVID time ऐसा था कि they hardly used to go out and do that. So she said my stress comes from कि पीछे से बच्चे रो रहे हैं, mother-in-law कुछ कह रही हैं, शोर आ रहा है, different kind of things happening, noises आ रही हैं, kitchen में खाने की सीटी बज रही है, so different things. And we were not even thinking of this particular problem कि this can create a lot of stress and anxiety. When she spoke, there were 7 more members of that team, 50 employees में से जिन्होंने कहा we are also facing similar problem. They were male members also, जिनको ये सब problems हो रही थी because of the compact houses. So we don't even think of these situations कि किसका घर कैसा है क्या एटमॉस्फेयर है कितने लोग रह रहे हैं हमें ये जानकारी होती भी नहीं है and obviously we don't get into. But it can become such a major cause of stress and anxiety that these persons were actually thinking of quitting the job. And they were good employees. So we were taking this training. And then we found out the solutions. We then hired co-working spaces उनके घर के पास में वहाँ उनको भेजा कि घर में at least 3-4 घंटे के लिए they can work from there. So solutions were provided. But till the time you don't know the problem, you won't be able to. So setting up good people and culture for the organization, you need to understand everybody's point of view or their problems or the challenges they are facing. That's when you can create a very healthy culture for the organization, right? So this is how you can do that. And there are specialists in these areas who know how to run a good culture. So a lot of activities they perform, employee engagement activities, happiness culture ke liye. So these things you need to do on a regular basis. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कुछ पोर्शन पीपल एंड कल्चर में आ जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स एंड हेल्प यू आर प्रोवाइडिंग मोटिवेशन अप करने के लिए मोरल अप करने के लिए देन यू कैन डू दैट फिर आता है कंप्लायंस पार्ट ऑफ एचआर कंप्लायंस इज 100% गवर्नमेंट रिलेटेड एक्ट्स एंड इनकम टैक्स PF, gratuity, whatever we are talking about. So all 100% government policies and rules, which is utilized for HR, needs to understand right from labor laws to industrial dispute laws to compensation and benefit laws. Everything you need to understand and learn, and how you can effectively use those government policies in. So government policies के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि इस तरीके से बनाई गई है कि employee के लिए बहुत beneficial है. And most of the employees in today's organization don't know about these compliances, right? Because HR में बड़े institutions में भी MBA में compliances के ऊपर बहुत focus नहीं दिया जाता. So most of the HRs you will find even now senior level पर भी उनको compliance बहुत अच्छे से नहीं पता होगा. बहुत कम percentage of लोग होंगे जिनको ये पता है. So it's a very good area where you can bring
your expertise if you learn all those things. Right? We take you through all those compliances really well in this course. Right? So these are the areas where you can become journalist. सब कुछ कर लोगे तो जर्नलिस्ट हो, स्पेशलाइज करोगे तो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस पे जॉब अच्छे से मिल जाएंगे. So that's about today's class. Tomorrow we will start with recruitment and talent acquisition. That's the first portion we will touch upon. Recruitment and talent acquisition से पहले भी इसका एक बहुत important part होता है, which is called human resource planning या manpower planning. और third इसके लिए use होता है workforce planning. So any of these you can read about it a little bit so that you are prepared for the class tomorrow. We will go through it. थोड़ा बहुत mathematical वो है calculations, not much difficult. किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फोरकास्टिंग करना 5 साल के लिए या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, ऑन व्हाट बेसिस वी डू दीज कैलकुलेशंस, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना होता है व्हेन वी आर हायरिंग पीपल मैन पावर प्लानिंग करके. ऑलराइट, सो वी विल डू दैट टुमारो. राइट, थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव इन टुडेज क्लास, प्लीज फील फ्री. No, ma'am, it is clear. Okay, great. You want to change something in the way teaching, let me know also. If you want to bring in more examples, more PPTs, more slides, let me know so that I can then prepare. अभी तो आज वाला तो it was not really much. कल का देखने के बाद then you can give that feedback. Okay. Yeah. All right, thank you so much. Enjoy your Sunday. Thank you so much, Thank ma'am. you. Let's meet. Thank you. All right, thank you so much, Ivan. Bye bye. Good night. Good night.